Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Sai, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on Mathematics Paper 3, Dynamics for BA, BSC, 6 Sem, third year on the chapter Calculus, Laws of Planetary Motion. We will today do motion under the inverse square law. To show that the path of a particle which is moving so that its acceleration is always directed to a fixed point and is equal to mu at a distance called square is a conic section, and to distinguish between the three cases that arise, to show that the path of a particle which is moving so that its acceleration is always directed to a fixed point and is equal to mu divided by distance का square. Inverse square law is a conic section होता है, ये सिद्ध करना है, and to distinguish between the three cases that arise. अच्छा, और distinguish करो तीन जो केस आते हैं. Since the force is directed to a fixed point, so the path of the particle is a central orbit. क्योंकि ये डायरेक्टेड फोर्स है जो डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है, इसलिए ये पाथ कैसा है, सेंट्रल ऑर्बिट है. दिस सो डैट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सेंट्रल ऑर्बिट. देयरफॉर जर्नल एक्सेलरेशन इक्वल म्यू बटे आर स्क्वायर. देयरफॉर क्या होगा, सेंट्रल एक्सेलरेशन बराबर है म्यू बाई आर स्क्वायर. The differential equation of central orbit in pedal form is, ये हम कर चुके. The differential equation of central orbit in pedal form is h square बटे p cube dp by dr is equal to capital F is equal to mu by r square. Therefore minus 2h square p की पावर minus 3 dp, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, minus 2 mu r की पावर minus 2 dr. तो अपनी तरफ से लिखे इसका मतलब इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करो तो एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है यहाँ, डी पी -2 p की पावर -3
तो ये एक बड़ी की पावर है p की पावर -2 और उसको नीचे ले आओ p स्क्वायर माइनस ये 2 कट गया। इसी तरह 2 म्यू बटे r प्लस c1 वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट इन सेंट्रल ऑर्बिट में क्या होता है v न्यू न्यू है या v है v इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर फ्रॉम 1 पुट कर दे इसको v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई r प्लस c1। अब केस नंबर ये सेकंड आ गया। केस नंबर 1 में क्या है इलिप्टिक पाथ सॉरी if a b are lengths of semi major and minor axis respectively then referred to focus if a and b are length of semi major and minor axis respectively then referred to focus as the pole। focus को pole ले लो। The pedal equation of ellipse is h square बटे p square equal to 2a बटे r minus 1। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। कंपेयरिंग 1 and 3rd तो h स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई a इक्वल टू c1 बटे -1। तो एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू बी स्क्वायर बटे ए एंड c1 इक्वल टू माइनस म्यू बाई ए। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन सेकंड इन वैल्यूज को सेकंड में पुट करो वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर माइनस c1 की वैल्यू माइनस म्यू बाई ए एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू बी स्क्वायर बाई ए। तो एच स्क्वायर पुटिंग दिस वैल्यूज इन सेकंड तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर प्लस c1 ये है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर माइनस c1 के म्यू बाई ए आ गया। म्यू कॉमन 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए। केस नंबर 2 है पैराबोलिक पाथ है अगर सेंट्रल ऑर्बिट इफ फॉर ए इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देन रिफर्ड टू फोकस एज पोल। अगर फोकस को पोल ले लें the pedal equation of the parabola is p square equal to ar और 1 by p square equal to 1 by ar। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर we have h square by 1 equal to 2 mu by 1 equal to c1 by 0। एच स्क्वायर बटे 1 इक्वल टू 2 म्यू बटे 1 बाई ए इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बटे 0। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू into and c1 equal to 0। Putting these values in second we get v square equal to 2 mu by r c1 0। Hyperbolic path if a and b are the lengths of semi transverse and conjugate axes respectively then referred to focus as pole। The pedal equation of hyperbola is b square by p square equal to 2a by r plus 1। Comparing 1 and 5th
फिफ्थ इक्वेशन है, वी हैव एच स्क्वायर बटे वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई ए इक्वल टू C1/1। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू बी स्क्वायर बटे ए एंड C1 इक्वल टू म्यू बाई ए। Putting these values in second, we get v square equal to mu 2 by r plus 1 by a. The equation 1 represent a conic section whose focus is at the center of force. In case of elliptic path, h square equal to mu b square by a equal to mu l. b square by a क्या होता है? Length of semi latus rectum, where L is the length of semi-latus rectum. In case of parabolic path, h square equal to 2 mu a equal to mu L, where L is the length of semi-latus rectum. In the case of hyperbolic path, h square equal to mu into b square by a is equal to mu L, where L is the length of semi-latus rectum. Corollary है, the particle is projected from a point at a distance capital R from the center of the force with velocity v in any direction, then the path is ellipse या parabolic or hyperbolic according as v square is less than equal to or greater than 2 mu by r. If c1 is the velocity acquired by the particle in falling from infinity to a distance r, then c1 square equal to minus 2 integration b1 square c1 b1 square equal to minus 2 velocity from infinity integral infinity to a f dr minus 2 integral infinity to a mu bate r square dr equal to 2 mu by capital R. Thus the path of the particle is elliptic if velocity at any point less than velocity from infinity to that point. The velocity from infinity to that point है वो बड़ी हो, ellipse if velocity at any point parabolic if velocity at any point is equal to velocity equal है उसमें है less than velocity from infinity to that point. Hyperbola if the velocity at any point is greater than velocity from infinity to that point. Corollary है if v two is the velocity for the description of a circle of radius capital R, then v2 का स्क्वायर बटे r इक्वल टू म्यू बटे r स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन। v2 क्या हुआ अंडर रूट म्यू बाई r बराबर 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 म्यू बाई r, तो 1 बाई अंडर रूट 2 वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोर्स। 1 बाई अंडर रूट 2 ये क्या है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स। अब एक प्रॉपर्टी करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स। ये आपका एलिप्स है, क्या है रेफर्ड फिगर 10 पॉइंट जो भी है
here C is the center and S dash are the two foci of the ellipse. ठीक. Let P be the point on the ellipse. ellipse के ऊपर P point है. Here L dash PL tangent है to the ellipse at point P. From the two foci draw SM perpendicular to LL dash and S dash N perpendicular to LL dash and SM perpendicular to LL dash. ठीक. If 2A to B are lengths of axis, then SM into S dash N equal to B square. SP plus S dash P equal to 2A. B square equal to A square 1 minus E square. Angle SPL is equal to angle S dash PL dash. S dash PL dash. ठीक. तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिप्स की, इनको यूज़ करते हैं. तो एग्जांपल है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज ऑफ ए सर्टन planet in its orbit round the sum are 30 km per second and 29.2 km per second respectively. ये तो ग्रेटेस्ट है 30 km per second एंड लीस्ट वेलोसिटी है 29.2 km per second of a certain planet in its orbit round the sun. Respectively, find the eccentricity of the orbit. तो ये कब कवर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016-15-12. सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट राउंड द सन इज एन एलिप्स. ये हमें पता है कि एलिप्स होता है. सच दैट सन इज एट वन फोकस एस, एक फोकस पे है. इफ V is the velocity of the planet at distance r from sun and A is the length of semi-major axis, then V square equal to mu 2 by r minus 1 by A. Standard result है. Here V is greatest if R is least. ठीक है. अगर R छोटा सबसे तो V greatest होगा. ये इन्वर्सली है. एंड V is least if R is greatest. उल्टा है. तो फॉर V equal to 30 km per second, R equal to SA, equal to CA minus CB. This is the figure CA minus CB. CA minus CS CA minus CS. तो ऐसे रह गया ना. तो CA है आपका माइनस CS AE है. सेंटर से फोकस तक की दूरी. तो A कॉमन 1 माइनस E एंड ये क्या है? और V इक्वल टू 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड. R इक्वल टू SA डैश CA डैश प्लस CS A प्लस A इक्वल टू A इंटू 1 प्लस E. पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1 में पुट करो तो 30 का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए म्यू 2/r क्या है ए 1 माइनस ई माइनस 1/a, तो म्यू तो एज इट इज़ है 1 प्लस ई, एलसीएम ले लिया ए 1 माइनस ई, तो 1 प्लस ई रह गया 29.2 वी स्क्वायर म्यू 2 ए 1 प्लस ई आर की वैल्यू माइनस 1/a, तो ए 1 माइनस ई 1 प्लस ई एलसीएम, तो म्यू 1 माइनस ई। Second and third equation. Dividing second by third, we have 1 plus e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 29.2 अंडर रूट ले लो 1 प्लस ई डिवाइड 1 माइनस ई 30/29.2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्सेंट्रिसिटी आपकी 1/74, thus eccentricity of orbit is 1/74. Okay, next example is a particle describes an ellipse under a force mu / distance का square towards the focus. If it was projected with velocity v from a point distant r from the center of force, show that its periodic time is 2 pi by under root mu into 2 by r minus v square by mu की power half. Solution. Since force is directed to a fixed point, so the path described is central orbit. Let A be the length of the semi-major axis of the ellipse described by the particle. The velocity v, capital V, of the particle at a distance r from the center of force is given by v square equal to mu 2 by r minus 1/a. ये होता है, निकाले हमने, और v स्क्वायर बाई म्यू इक्वल टू 2 बाई आर माइनस 1/a, और 1/a इक्वल टू 2 बाई आर माइनस v स्क्वायर बाई म्यू, और a इक्वल टू 2 बाई आर माइनस v स्क्वायर बाई म्यू की पावर -1. Therefore periodic time 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू यू की पावर 3/2, 2 पाई ए की पावर 3/2 अंडर रूट म्यू, तो 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू 2 बाई आर माइनस बी स्क्वायर बाई म्यू की पावर -3/2. If planet were suddenly stopped in its orbit when at a distance a from the sun, show that it would fall in the sun in time under root 2 पाई ए की पावर 3/2 फॉर अंडर रूट म्यू. चलना बंद कर देता तो इस पर फॉल करेगा सन पे, विच इज़ 2 अंडर रूट 2 बाई 8 टाइम्स the period of the planet's revolution. The solution है, let the orbit of the planet be circular having radius a and planet is suddenly stopped at p पे stop हो जाता है, that is the velocity becomes 0. Then it begins to move towards the sun in a straight line under the acceleration mu by r square. Therefore equation of motion along ps is r dv by dr equal to minus mu by r square, where r is measured from s r decreasing. इंटीग्रेट करो तो v स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू म्यू बाई आर प्लस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
implies b square equal to mu बटे r plus c 1. इनिशियली व्हेन r इक्वल टू a रेडियस के बराबर है, c इज इक्वल टू 0 है, फ्रॉम 1 c इज इक्वल टू -2 म्यू बाई a हो गया. पुट करो इसकी वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन 1, तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई ए. तो ए आर इसका एलसीएम लिया 2 म्यू ए माइनस आर, तो v इक्वल टू अंडर द रूट 2 म्यू अंडर रूट ए आर ए माइनस आर बटे ए आर. v क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा होता है, माइनस अंडर रूट 2 म्यू अंडर रूट ए माइनस आर बटे अंडर ए आर. तो डी आर एक साइड रखो और डी टी एक साइड, तो आर डिवाइड बटे ए माइनस आर की पावर हाफ. आर को एक साइड लेंगे डी आर, बाकी एक साइड माइनस अंडर रूट 2 म्यू बटे ए डी टी. तो अब इसमें इंटीग्रेट करो इट फ्रॉम आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू 0, ए टू 0. द टाइम टी टू रीच दिस सन इज गिवन बाई ए से 0 जा रहा है, आर डिवाइड बटे ए माइनस आर की पावर हाफ डी आर माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई ए इंटीग्रल 0 से टी डी टी. बट आर इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा सर्कल के लिए है, सो डेट डी आर क्या है, -2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा. नाउ व्हेन आर इक्वल टू ए है तो थीटा इक्वल टू 0 है, एंड व्हेन आर इक्वल टू 0 है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है. तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड माइनस अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ए कोस स्क्वायर थीटा बटे ए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर हाफ इंटू -2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा. तो -2a इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कुछ कट गया, ये कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया. और ये अंडर रूट माइनस कैंसल, अंडर रूट 2 म्यू बाई ए टी इक्वल टू 2a हाफ पाई बाई 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है. और टी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई ए की पावर 3 बाई 2 बटे 4 अंडर रूट म्यू, और इसको सिंप्लीफाई करो, पाई ए की पावर 3 बाई 2 अंडर रूट 8 म्यू. ऑल्सो पीरियड ऑफ द प्लेनेट्स रिवोल्यूशन, टी क्या होता है, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू ए की पावर 3 बाई 2. तो टी बटे कैपिटल टी इक्वल टू पाई ए की पावर 3 बाई 2 बटे अंडर रूट 8 म्यू इंटू अंडर रूट म्यू बटे 2 पाई ए की पावर 3 बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 बटे 8. Therefore t equal to under root 2 बटे 8 into t which is the required time. T from under root 2 by 8t which is the required time. Okay. Next example is we will do in the next lecture. Okay. Students, you can view this present lecture on college website www.bljscollege.com. There you will find your channel YouTube, and you can download from there. Okay, thank you. We will meet in the next lecture.